Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Uzma Jafri. Let's see what we have lined up for you this week. People in Gilgit-Baltistan protest against unlawful land grabbing. Teachers in Saran region of Pakistan-occupied Kashmir stage a sit-in against corrupt education system. High-tech poly houses ramp up vegetable cultivation in the Kashmir Valley. Central schemes transform lives of rural women in Jammu and Kashmir. And in our special section of Incredible India, we take you to see how different regions of India celebrated and welcomed Uttarayan, or the spring season, in a number of different ways. Scores of people came out against the government of Pakistan over the issue of illegal land grabbing in Gilgit-Baltistan. Simmering discontent over the denial of basic rights and lack of development has erupted in massive protests in Minawar area. Residents held demonstrations against the authorities over prevalent illegal land grabbing issues in the region. We have a report. Protest erupted in Minawar area of Gilgit-Baltistan over the land grabbing and demolishing of houses by the local administration, which locals claimed is in support of land mafias backed by Islamabad. The land grabbing issue also triggered a widespread protest against the Chief Minister of Gilgit-Baltistan, Kashir, and the government of Pakistan outside the Gilgit Press Club. The protesters have alleged that the administration is snatching their land by declaring them Khalsa Sarkar, a phrase used to identify lands that the government says belong to Pakistan through its puppet government in Gilgit-Baltistan. चीफ मिनिस्टर को लैंड माफिया की पुष्पनाई हासिल है। चीफ मिनिस्टर को वहां मिनावर में कुछ जमीन भी मिली है, जिसकी वजह से चीफ मिनिस्टर ने ये रात को ये कार्रवाई डाली है और इसके पीछे चीफ मिनिस्टर का अहम रोल है। वक्त आने पर हम वो सबूत भी सामने लाएंगे कि चीफ मिनिस्टर गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर लैंड माफिया को सपोर्ट कर रहा है और मिनावर के इन जमीनों को हथियाने के लिए सबसे पहले वहाँ के बेगुनाह नौजवानों पे एटीए लगाया गया। उससे भी काम नहीं चला तो रात के तारीखी के अंदर आकर, जबकि मैंने चीफ कोर्ट गिलगित-बल्तिस्तान से बीबीए लिया हुआ था, उसके बावजूद मुझे उठाया गया। आगे नहीं लेके आ रहा है। Locals claim that Pakistan Army is also exerting coercive claims over their land and resources. Most of these demonstrations are being held in various parts of Gilgit-Baltistan as land grabbing issues are mounting across the region. Residents fear that they could soon become a minority in their territory if the influx and settlement of outsiders remain deliberate and unregulated. पूरे इलाके में कभी मजहबी फसादात में फंसाया गया। अभी हर गांव में लोगों को आपस में लड़ाने की एक साजिश की जा रही है। पिछले दिनों आपको पता है एसी साहब वहां से नाकाम होकर आए थे, वहां पे बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, एक रिकॉर्ड हुआ। अभी उसके बाद तकरीबन हमारी लिस्ट में अभी तो ये सर्दियों के मौसम में गरीब लोग हैं, वहाँ घरों से बाहर निकलने के लिए उनके पास किराया भी नहीं है। तो मिनौर से यहाँ तक ये लोग आए हैं, अभी आ रहे हैं। पीछे बहुत सारे, हमने 3 बजे का टाइम दिया है। वहाँ पे तकरीबन 450 ऐसे लोग हैं, ऐसे घराने हैं जहाँ जिनके लिए कब्रिस्तान की ज़मीन नहीं है। Pakistan has put constraints on the local media to not cover the ongoing atrocities and mass protests in Gilgit-Baltistan. The people of Gilgit-Baltistan are facing several challenges due to meddling by Islamabad in their local affairs. This has pushed the resource-rich region of Gilgit-Baltistan towards poverty and backwardness.
A large number of teachers and locals in Pakistan-occupied Kashmir were out on streets to protest against the corrupt education system in the Saran region. Over 7 decades have passed and the people in the region are still leading their lives in deprivation. Education in particular has borne the brunt of the discriminatory policies of Pakistan. Some say the policies are essentially framed to keep the people of the region marginalized. Pleas and demands of teachers have gone unheard. This systematic oppression coupled with widespread corruption has led to a major section of POK's populace remain undereducated. Those who should be teaching in the classrooms, imparting knowledge, are forced to protest on the streets for their rights. Teachers in the illegally occupied POK have accused the government of using unethical means for transfers and promotions in their departments. They accuse that corruption and nepotism was widespread in the region, and people with political connections were getting all favors, while those who are deserving were being deprived. The government has prioritized people in its close proximity over even those who are in the desperate need of transfers. आज हम सरा के मुकाम पर खड़े हैं और यहाँ पे ट्रैफिक जाम है, रोड बंद है और उसका जो हमने मालूम किया तो पता चला है कि एक खातून है, टीचर हैं, उनका तबादला सरा से खिलाना कर दिया गया है और ये भी मालूम हुआ है कि उनके जो खावंद हैं वो इस वक्त कैंसर के लास्ट स्टेज पर हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं और जो DPI हैं मुतल्लिका स्कूल के तो उन्होंने कोई अपनी अजीज़ा का है जो उन्होंने अपना तबादला यहाँ करवाया है और उसके बदले में एक जो अपना खातून है यहाँ की उसको उन्होंने खिलाने भेजा है और हम समझते हैं अगर ये बात ठीक है तो ये वाकई ज़्यादती है। The authorities have time and again made hollow promises but have never walked the talk. And now, with no place to go, the teachers are left with no option but to demonstrate against the government. People in the occupied regions are never treated at par with those who live in parts of Pakistan. The government claims to have made special arrangements for the people of POK, but in reality, Islamabad-appointed leaders have only mistreated and marginalized the people of these regions. उनकी जो बीवी है उसको यहाँ से तब्दील करके खिलाना लगाया गया है और जो यहाँ पर जिसको तरक्याब करके यहाँ लगाया गया है, असूल ये कहता है कि जो खाली पोस्ट हो वहाँ तरक्याबी होती है। ये कहाँ का असूल है कि उसको आप एक खातून को यहाँ से अपने घर से तबादला करके उसको खिलाना लगा रहे हैं और जो मकामी जो है उसको डिस्टर्ब भी कर रहे हैं और जिसका मियाँ जो है वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। People say the unscrupulous leaders have not shown any political will thus far to change the status quo of the region. The people in the region, cutting across professions, are suffering. Anti-government sit-ins have become a common sight in the region, but little have they succeeded in gaining anything. It is teachers today, doctors tomorrow, and workers of some other professions the other day. The suppressive and exclusionary story of Pakistan-occupied Kashmir doesn't seem to be ending, at least as of now. Moving on, agriculture has always been the backbone of Jammu and Kashmir's economy. Around 70% of the territory's population is directly or indirectly engaged in the agricultural activities. Authorities in the territory are determined to give a major boost to vegetable cultivation in the Kashmir Valley by setting up high-tech polyhouses in different parts of the territory. Let's have a look. Vegetable cultivation is becoming a popular source of livelihood in Jammu and Kashmir.
Providing a major boost to the sector, authorities had launched the Kitchen Garden scheme with different facilities for vegetable cultivation outside residential spaces. Under it, high-tech polyhouses are set up which are helpful in preparing vegetable saplings during harsh winters. To prepare high-quality vegetable saplings for people, sowing the process of seeds and preparation of land is in full swing in high-tech polyhouses in the valley. सीड भी लगाते हैं और जो मार्च में हम सीडलिंग देते हैं उसी की तैयारी इस वक्त चल रहे हैं और पूरा मैन पावर इसमें लगा हुआ है। इस वक्त जो खुदाई गुड़ाई जो तैयारी चल रही है इसी के लिए हम जो सीड के लिए तैयारी चल रही है ये उसी के लिए है। जो हम हाइब्रिड सीडलिंग यहाँ पर बनाते हैं वो बाहर बर्फ़ में नहीं बनते हैं जो इस वक्त बाहर माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर बहुत हाईटेक है, पॉली हाउस है, इसीलिए हम यहाँ पर पहले ही जो सीडलिंग फरवरी मार्च में तैयार करें कि वो अगले सीजन में लग जाए, फार्मर को प्रोडक्ट अच्छा मिले, क्वालिटी हाइब्रिड सीडलिंग मिले जो बाहर नहीं बनती है, उसके लिए हम वो इस वक्त तैयार करें। अभी प्रिपेयर करते हैं ज़मीन को क्योंकि बाहर जो एटमॉस्फेयर है वो सूटेबल नहीं है और इसलिए हम ये प्रिपरेशन करते हैं अंदर ही हाईटेक में और इसमें गर्मी रहती है और आने वाले दिनों में हम इसमें वो बीज डालेंगे और नेक्स्ट सीजन में हम देंगे। और यहाँ पर जो क्वालिटी होती है सीड की वो हाई क्वालिटी होती है और ये ज़मींदारों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकलती है इससे और इसी वजह से आज हम ये प्रिपेयर करते हैं ज़मीन को और ये बीज बोने के लिए। Despite the off-season and harsh winters in the valley, people, with the help of high-tech polyhouses, are able to prepare good quality vegetable saplings, providing proper temperature. High-tech polyhouses are made of high-quality fiber material and have all types of facilities including proper heaters, temperature controlling system, dripping system and a good ventilation system. High-tech polyhouses have been brought to use by the Agriculture Department Kashmir to prepare these hybrid vegetable seedlings. They will help to upscale the cropping intensity of vegetable seedlings under controlled conditions. हमारी जो ये लैंड प्रिपरेशन है इसमें हम हाईटेक्स में इसमें हम बेसिकली ज़्यादातर इस सीज़न में एक तो हम कॉलीफ्लावर लगाते हैं, कैबेज लगाते हैं और नूलखोल लगाते हैं। कुछ एग्जॉटिक भी हमने 1-2 साल से यहाँ इंट्रोड्यूस किए हैं जिसमें ब्रोकली ज़्यादा चलता है, रेड कैबेज मिलता है हमारे पास, पारसी सिलेरी भी देते हैं हम। लास्ट ईयर हमने चेरी टोमेटो को भी इंट्रोड्यूस किया यहाँ, वो भी अर्ली यहाँ रेडी होके फार्मर्स ले गए, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमें। ये बेसिकली हाईटेक इसीलिए बने हैं कि ताकि इनका इस्तेमाल सर्दियों में ही किया जाए, इससे हमारा टाइम बचता है। जो हमारा सीज़न अगला स्टार्ट होगा, अगर ओपन में हम सीडलिंग लगाए तो सीज़न फरवरी से स्टार्ट होगा, फरवरी एंड से स्टार्ट होगा। For the last few years, since the department started these exercises, growers are utilizing these vegetable seedlings prepared by experts of the Agriculture Department on a larger scale as they are getting good results in the shape of a quality vegetable crop. With such a controlled environment, these high-tech polyhouses are able to grow 3 times more hybrid vegetable saplings, due to which farmers will be able to avail them the entire year, even during the off-season. With an aim to reach out to the weaker section of society and empower women in economic endeavours, the Jammu and Kashmir government has launched a number of schemes. One of them is the Ummeed scheme, under which skill training is provided to locals, especially women, in order to encourage them to establish their own small enterprises. Moving on the same lines, authorities in Kalakot district provided free of cost training to 20 women in sheer pine needle handicraft.
They say any society that fails to harness the energy and creativity of its women is at huge disadvantage in the modern world. Therefore, it becomes important to provide opportunities and platforms to help women to learn new skills or hone the existing ones. Considering the same, J&K administration keeps on taking a number of initiatives to empower women by way of making them independent. The recent one being the establishment of a Charpine Needles Handicraft Training Group, where skill development training is being provided to women from far-flung areas. It has been set up under the centrally sponsored scheme National Rural Livelihood Mission or NRLM, which is being run in the Union Territory as Jammu and Kashmir Rural Livelihood Mission or Ummeed. उम्मीद जो सबसे पहले हमारे ब्लॉक कालाकोट जो अर्स्टवाइल ब्लॉक है जिसमें मोगला और कालाकोट दोनों ब्लॉक आते हैं 2014 में स्टार्ट हुआ, जिसमें आज तक हमारे अराउंड 950 एसएचजीज हैं। तो ये इसमें कोई तकरीबन 64 वीओज हैं और 6 सीएलएफ हैं। और ये हमारा जो मॉडल सीएलएफ है क्लस्टर ए है और इसमें महिला क्रांति इसका नाम है। इसमें 2022 में जब हमने ये एक ट्रेनिंग स्टार्ट की थी चीड़ पाइन नीडल की, ये कंसेप्ट हमें हिमाचल से मिला था, जो सबसे पहले हिमाचल में ये पाइन नीडल्स का इन्होंने काम शुरू किया था। तो हमारे इसमें एक दिन की इनको ट्रेनिंग दी थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तावन के साथ। उसके बाद इन्होंने अपना ये इसमें लाइवलीहुड करना शुरू कर दिया। तो ये बहुत अच्छे डिज़ाइन बनाते हैं, ये लोग अच्छे से काम करते हैं इसमें। A total of 20 women are being trained at a centre which is located in the Mogla block of the Kalakot subdivision of Rajouri. These women are using Charpine needle technique to make beautiful handicraft items like trays, pen holders, baskets, purses and more. These women have sold items worth Rs 50,000 in a span of 12 months, and the demand for their items is constantly on the rise. After the training, these women can also get subsidized loans under the scheme and start their own small businesses. Trainees are effusive in their praises of government for introducing such a scheme, which is helping them to become self-reliant. In 2014 में हम NRL में जुड़े और मतलब कि पहले ये चीड़ पैन है जो इसका हमें पहले पता नहीं, ऐसे ही लोग जला देते थे इनको। लेकिन बाद में हमें ट्रेनिंग मिली 2022 मार्च में। तो फिर हमने ये मतलब कि काम शुरू किया, इसको बुकोकर हमने पेन होल्डर, टोकरियाँ और टी कोस्टर और ये बनाने शुरू किए। इससे हमने मतलब कि जहाँ पे मेले लगते हैं जैसे रजौरी जम्मू मेले लगते हैं तो वहाँ पे भी हमने मतलब कि बेचा। ये ऐसे बेस्ड होते थे, लेकिन इसमें हमें अब पता लगा कि कितना फ़ायदा है। Women empowerment under the Ummeed mission is extensively based on capacity building and strengthening community-based institutions by empowering rural women at different levels. Even in the most far-flung areas of the territory, they are emerging as entrepreneurs and ranging from garments to cosmetics to agriculture. They are slaying in almost every business. Ummeed, as the name suggests, is truly emerging a ray of hope for a number of rural women in Jammu and Kashmir to achieve their dreams and progress towards a happier and independent life.
फिर आस्ता आस्ता हम इनके साथ कोऑपरेट करने लगे, ये हमें बताते कि हम इनके कहने पे चलते रहे। फिर इन्होंने अभी कोई मार्च 2022 में एक ट्रेनिंग दी ये चीड़ पाइन की। तो लेडीज ने पहले तो ये सोचा कि ये वेस्ट मटेरियल होता है, इसका हम क्या बना सकते हैं, कुछ भी नहीं है ये। फिर जब उन्होंने ट्रेनिंग ली, जब इन्होंने देखा मटेरियल बनाना शुरू किया, ये देखो हमने इतनी सी टोकरियां बनाई हैं, बहुत कुछ बनाया ये, और बेचा भी है हमने। इससे सेल भी कम से कम की 50,000 की सेल कर ली है अभी हमने 1 साल में, सभी बहनों ने मिलके। Ummeed scheme is tasked with reaching out to all low-income families, connecting them to options for sustainable livelihoods and nurturing them until they are able to escape poverty and live decently. It's a fantastic effort by the federal government that not only boosts the skill of women in Jammu and Kashmir but also gives them confidence. In our section of Incredible India, we now take you to different parts of the country to see how India welcomed Uttarayan, the period where winter starts fading into spring. Popularly known as Makar Sankranti, this period is a time of merriment and celebration for all. Let's take a look. India got soaked in festive fever as it observed Makar Sankranti, the most ancient Hindu festival dedicated to God's sun. During this period, sun ends its southward journey and starts moving northwards. The festival also marks the first day of sun's transit into the zodiac sign Makar or Capricorn. Though observed as harvest festival, its cultural significance as well as way of celebration varies across the country. In cities lining the holy rivers, especially Ganga like Haridwar, Ayodhya and Patna, millions of Hindus brave the cold temperatures and begin the day by taking a dip in the holy waters. Their gesture is believed to have the power to wash away all the sins. They also make a Tuladan, a tradition where devotees make offerings to priests and the poor. मकर संक्रांति के अवसर पे माँ गंगा ने बुलाया तो बस स्नान करने चला आया। स्नान करने से ही लगता है कि मन में पावन भावना आ जाती है। मकर संक्रांति के प्रति जो श्रद्धा है, इसीलिए तो हम इतने ठंड के बावजूद यहाँ नहाने आए हैं। ठंड तो बहुत ज़्यादा, मतलब नहाने के लिए हिम्मत चाहिए और ये हिम्मत हमारी श्रद्धा से ही आई है। In states like Punjab, Himachal Pradesh and capital New Delhi, the festival is celebrated as Lohri, that commemorates the harvesting of the rabi or winter crops and also marks the beginning of a new year for the Sikhs. The beats of drums and the inviting flames of a bonfire that defy the freezing winds marks the celebration of this auspicious occasion. As a part of the ritual, eatables such as dry fruits, popcorn, sesame seed and molasses are first thrown in the fire and later served to everyone, spreading abundance and happiness all around. आप देख ही रहे हैं लोहड़ी का त्यौहार, हर जगह बैंड बाजे बज रहे हैं और सब लोग खुशियों से मना रहे हैं इसको। और ये खुशियों का त्यौहार है, सब लोग एक दूसरे से मिलके मनाते हैं इसको। तो आज हम सभी, हमारे बेटा हुआ है, पहली लोहड़ी है और इसी के साथ हमारे सब रिश्तेदार आए हुए हैं और हम पहली लोहड़ी आज बड़े धूमधाम से सभी लोगों के बीच में मना रहे हैं। Skies of northern and western parts of India were adorned with colorful kites, as kite flying is an important ritual of the festival. Hundreds of people gather on their rooftops to fly kites and even battle against each other for aerial supremacy. Kite festivals were also organized all around the country, where locals and tourists enjoy the winter breeze and flew kites. बहुत ज़्यादा पतंगें उड़ती हैं आज के दिन, स्पेशली आज जो होती है वो हम लोग की सालाना पतंगें होती है। एक ही कलर की पतंग उड़ती है, जैसे एक कलर मैं नीला उड़ाऊंगा तो ये भाई जो हैं ये हरा उड़ा सकते हैं, तो ऐसे करके पतंग लड़ती है। आज के दिन ऐसे ही पतंग रखी जाती है, जिसमें तहरी भोज भी होता है हम लोगों का। In Tamil Nadu, Makar Sankranti is celebrated as Pongal. During the festival, women make beautiful rangolis, cook rice and milk in earthen pots and watch it overflowing.
After adding freshly harvested grains, it is offered to God's son, which is considered as a sign of abundance as it brings fortune to farmers' life. पोंगल इसलिए बना रहा है तो अपन किसान लोग नया चावल फसल निकालने के बाद पहले चावल सूर्य भगवान का सूर्य शक्ति नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है. सूर्य शक्ति को धन्यवाद देते हुए, नेचर को धन्यवाद देते हुए आज सूर्य पोंगल है. Now if you pan towards northeastern India, the festival is observed as Bhogali Bihu, especially in Assam. During the occasion, people erect a traditional bonfire called mechi, a house made of straw, and burn it during the celebration. Various types of rice cakes and other sweets are also prepared during the festival. असम में हर प्रांत में बराक हो या ब्रह्मपुत्र हो, पहाड़ हो या घाटी हो, हर प्रांत में आज भोगाली बिहू, माघ बिहू मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से. किसानों का त्यौहार है और सारे देश में अलग अलग नामों से मकर संक्रांति को आज बड़े किसान और हमारे देश के जनता बहुत भक्ति भावनाओं से इसको मना रहा है. मैं सबको आज देश की जनता को, विशेष रूप से किसान जनता को मैं हृदय से शुभकामना देता हूं. Makar Sankranti is not only a festival but also the symbol of life, which shows the incredible diversity of cultures and traditions in India. As entire nation welcomes the harvest season amidst the freezing temperature in frosty nights and fog, this festival brings warmth of joy and happiness. That's all we have for you in this week's episode. Goodbye and take care.